So guys, this is just my close-up look again for the matte look I have created today. This is a purely a matte look, which is my personal favorite matte primer, matte foundation. There is no bronzing, highlighting, and there is just a matte colors and matte lipstick. Matte lipstick again is my favorite one, guys, and this is just a close-up one. You can see how precisely I have created this a smoky eye plus a smudgy eyeliner look. Both are my absolute favorite, and this is going to be a little detailed and little lengthy video, guys, because मैं आपको step by step पूरा process explain करने वाली हूँ. So let's just begin with the look, guys. I'm just going to moisturize with Pond's moisturizer, hyaluronic acid and vitamin A. I'm not doing much preparations like CTM, toning, moisturizing. I'm just going ahead with the simple moisturization. So after moisturization, I'm just going to go ahead and apply the lip balm from Wishcare, guys. ये बहुत ही ज़्यादा tinted नहीं है, तो थोड़ा ड्राई इफेक्ट इसमें रहता है. अदरवाइज़ कई कई लिप बाम अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा टिंटेड लगता है, देन आपकी मैट लिपस्टिक ग्लॉसी लगने लगती है. सो दिस डू नॉट हैव दैट पर्टिकुलर इफेक्ट. Moisturizing my lips, I'm just going to prime my face from Lakme primer. This much is enough, and नाक और मुंह की तरफ मैं ज़्यादा प्राइमर करूँगी बिकॉज दोज आर द हाईलाइटेड पॉइंट्स जहाँ पे आपको प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर बिकॉज यहाँ पे ही ज़्यादा पोर्स होते हैं आपके, और वहाँ से ही आपका फाउंडेशन क्रीज होना शुरू करता है. सो ये फेस का जो मिडल पार्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर विथ प्राइमर. After that, guys, it's just going to turn up to apply the foundation, mousse foundation from Maybelline. I'm just holding the concealer brush from Mass Cosmetics and I'm just applying it to all over my face. This is not an Indian product, guys. इसका shade है 1004 porcelain. ये इंडिया में लॉन्च नहीं है पर्टिकुलर शेड. ये mousse फाउंडेशन था पहले, बट ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है. सो ये बाहर का प्रोडक्ट है. आई बिलीव इन गल्फ. कवरेज ज़्यादा नहीं रखनी है, थोड़ा ही मुझे कवरेज देना है. आई एम जस्ट डूइंग इट रफली. उसके बाद मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करना है. सो नेक एंड फेस शुड नॉट लुक डिफरेंट इन कलर. यू हैव टू डू योर नेक एज वेल एवरी टाइम. नाउ आई एम टेकिंग द वेट ब्यूटी ब्लेंडर और उससे मैं इवनली स्प्रेड कर रही हूँ फॉर द नेचुरल फिनिश ऑफ माई फाउंडेशन. इट शुड नॉट लुक केकी. ईयर्स पे भी आपको करना है. योर ईयर्स, to apply the 9 to 5 range का concealer from Lakme itself, and I'm just going to pick up one pump. एक बारी में जितना कंसीलर आएगा उतना ही मुझे लेना है, और मैं हमेशा वही करती हूँ. आई डोंट रीटेक द प्रोडक्ट एवरी टाइम. just one single stroke to cover all over my face. This is not for the hiding anything, this is just for the sake of highlighting my face feature. And this is in the shade of lighter shade. This is lighter than my foundation if you're willing to highlight your face features.
This blender are from Real Technique. After that, I just want to lock my foundation, so I'm just using a Lakme 9 to 5 ka compact. So this is just my base, mousse, foundation, concealer, and this is just to lock up my base a little bit. So इस look में मैं बहुत ज़्यादा layer by layer base के लिए नहीं जा रही हूँ. Just a little coverage to, you know, look presentable for the entire look. Neck as well. I'm just quickly going to take the blusher from Faces Canada. ये एक coral और brownish shade है. So I'm just holding up the blusher brush from Mars. You can see the color. So इस look के साथ ये कलर का brush ही जा रहा था according to me guys, because this is a kind of smoky eye, maroon smoky eye. In this look guys, there is no contouring, no highlighter, just a matte look with the smoky eye. So I'm just done with my blush part. I'm just holding the palette from NYX Cosmetics and I'm going to use these two colors to fill my brows. And this is a brush from Mars again for eyebrows, for filling my brows. If your eyebrows are not done, that's fine. किसी look पे, you know, unshaped और ऐसे eyebrows अच्छे लगते हैं. So every time it should be not pointed and very well prepared. Okay, I've done with my brows and I'm just going to do with the spoolie. So guys, I have applied this tape. ये मैंने सेलो टेप अप्लाई नहीं किया है प्लास्टिक वाला, बिकॉज वो मेकअप करते करते ही निकल जाता है, उसका जो ग्लू इज़ नॉट दैट ग्रेट. तो मैंने ये पेपर टेप अप्लाई किया है. दिस इज़ गुड फॉर द लॉन्जिविटी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ रफ लाइन फ्रॉम मैक कोल, स्टूडियो फिक्स कोल. सो फॉर दैट गाइज यू नीड टू For this reason guys, you need to keep 3 brushes handy. So I'm going to pick up this brush and I'm going to lock this black color. I'm going to pick up this black color. So black colors, I'm just mattifying this, क्योंकि मुझे एक winged liner भी इसमें देना है. ज़्यादा thick नहीं करेंगे, just a blending for locking up this smudged liner. Okay, now I'm done with this. I'm going to hold the second brush and I'm going to pick up the maroon color. This is middle maroon color and I'm just going to blend it over in circular motion, क्योंकि जो maroon color है वो दिखना चाहिए. This is all about the maroon smoky eye look. So the maroon color should be visible. Okay, now I think I need to do the black color once again after this. Blending आपको नीचे पूरी रूट से करनी है in circular motion, ताकि black color भी इसमें smudgy दिखे, कोई harsh lines ना दिखे. Okay, now I'm going to take the second and the bigger brush. So I'm going to just take the brown color
एंड ये फाइनल स्मजिंग है इस लुक के लिए. इसको मैं ऑल ओवर मैं क्रीज करूँगी ऐसा. This is just a very simple easy step to create your smudgy look. Smoky eye look guys. Smoky eye हमेशा नीचे से स्टार्ट करना होता है from your lashes, नाक के ऊपर से. So you can see the beautiful smoky eye has been created almost. Okay. So this is exactly done. I'm going to just take this golden shimmer and I'm just highlighting my brow bone. Brow bone हो गया है. I'm just taking the same brush without even taking the product. मैं इसे हल्का सा blend कर रही हूँ. Okay. I believe I'm done with this lash look guys. Removing this out. You can see how much I'm getting this sharp line. This is what I was looking for. And I'm going to take this same kohl and apply to my lower lash line. ये होने के बाद दूसरा ब्रश लूँगी, पेंसिल ब्रश. आई एम गोइंग टू पिक अप द सेम ब्राउन कलर जो मैंने ट्रांजिशन पे दिया है. उससे मैं लाइटली स्मच करूँगी, वेरी लाइटली गाइस, बिकॉज इस लुक में जो मेरा ऊपर का आईलिड पे मैंने क्रिएट किया है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दैट्स इनफ. And I'm just going to apply this kohl here. Oh my god. Oh my god, this is looking fab. Now it's turn to do the mascara guys. मस्कारा भी रूट से अप्लाई करना है. Welcome back guys again to my very own YouTube channel. Today I have created another smoky eye look using maroon and brown color. Black is just an ideal color to create a smoky eye, black and brown color, but today I have created a look using matte मरून कलर एंड मैंने ट्रांजिशन क्रिएट किया है ब्राउन कलर से. ईच एंड एवरी स्टेप मैंने इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हाउ easily you can achieve the smoky eye look. You just have to have the good blending technique with you guys. There is just minimum base with just foundation, concealer and your compact powder, just matte blusher. There is no contouring, no bronzing, no highlighting. This is purely a matte smoky eye look. And lip पे भी मैंने एक ombre create किया है, ombre effect. I have used
द मरूनिश और रेडिश कलर इधर पे मैंने इनर लिप्स पे दिया है एंड आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्राउन कलर से इसे आउटलाइन किया है. देन आई हैव जस्ट ब्लेंडेड ओवर. दिस इज लुकिंग अ काइंड ऑफ ombre look, ombre lip look I have created today, guys. So this is just all about the breakup, about my today's look curated for you guys. And on top of that, this is exactly looking beautiful because मैंने smudging किया है. Smudging के बाद I had given this waterline पे black काजल, लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन दोनों पे मैंने वो क्रिएट किया है. सो उससे और भी ज़्यादा ये स्मोकी आई इंटेंस लग रहा है, गाइस. I really hope you liked my video. If you do, then please like, share and subscribe to my very own channel. You know how to appreciate this channel very well, guys. Please also follow my Instagram account for a better makeup content. As of now, Allah Hafiz.